Hey everyone, welcome back to our channel. मैं और वरुण एक बार फिर हाजिर हैं एक और बुक के साथ. That's right, Riya, और ये बुक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है. We have been exploring creative confidence by Tom Kelly and David Kelly, and let me tell you, it's been quite an eye-opener. Absolutely. This book is all about unlocking and nurturing your creative potential, whether you are an entrepreneur or an individual or a part of an organization. और वो एक चीज़ जिसने मुझे सबसे ज़्यादा स्ट्राइक किया है वो है जिस तरह से ऑथर ने चैलेंज किया है कॉमन मिसकंसेप्शन अबाउट क्रिएटिविटी. Totally. जब हम क्रिएटिविटी की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में किसी आर्टिस्ट या आर्ट फॉर्म की ही इमेज आती है और वो भी हमें लगता है कि ये इनबॉर्न क्वालिटी है. Authors emphasize that creativity isn't just reserved for a single few. It's a skill that can be cultivated by anyone, and they introduce this concept of creative confidence, which is so crucial in today's fast-paced world. Definitely. So let's dive into the key takeaways and examples that really resonated with us. First principle that author talks about is unleashing the creative potential. That is, creativity एक human trait है जो सब में होता है. बस ज़रूरत है उसे पहचानने की और उसे अपने mindset में एक जगह देने की कि we can be creative too. It's not just about the artist. Right, Varun? Very true. You know, बहुत सारी चीज़ें होती है जिसका ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. जेम्स डाइसन जर्नी टू क्रिएटिंग द बैगलेस वैक्यूम क्लीनर एक परफेक्ट एग्जाम्पल है. जेम्स डाइसन ने 5000 प्रोटोटाइप बनाए जो फेल हो गए, बट उन्होंने हार नहीं मानी और हर बार उसको बेहतर से बेहतरीन करते चले गए और फाइनली सक्सेसफुल भी हो गए. उनका ये सफर आसान नहीं था, बट क्रिएटिव माइंडसेट, परसिस्टेंस और रिजिलियंस के साथ उन्होंने चैलेंजेस को फेस किया एंड द पोटेंशियल फॉर डिस्ट्रप्टिव इनोवेशन टू चैलेंज एस्टेब्लिश्ड नॉर्म्स एंड क्रिएट न्यू अपॉर्चुनिटीज. Dyson stories serve as a powerful illustration for entrepreneurship and the mindset required to bring innovative ideas to fruition. Failure isn't the end, it's an opportunity to learn and grow. That's such an important mindset shift, isn't it? Very true. This one hit home for me. चलिए अब दूसरे प्रिंसिपल की बात करते हैं. That is practice empathy. Practice empathy का मतलब है to put yourself in shoes of others, जिसका मतलब ये है कि दूसरे क्या सोच रहे हैं, उनकी फीलिंग्स और उनकी प्रॉब्लम्स को अपनी प्रॉब्लम समझकर सॉल्व करने की कोशिश करना. फॉर एग्जाम्पल, another example presented in this book is the story of Oxo Good Grips kitchen tools. Sam Furner, founder of Oxo, was inspired to create more user-friendly kitchen utensils after witnessing his wife's struggle with traditional kitchen tools due to arthritis. बाबर और उनकी टीम ने एम्पैथी और सिंपैथी रखते हुए ऐसे किचन टूल्स डिजाइन किए जो कि आर्थराइटिस पेशेंट्स के लिए कन्वीनियंट यूज थे और वो बहुत ही जबरदस्त तरीके से काम आए टू द डेवलपमेंट ऑफ ऑक्सोज सिग्नेचर एग्रोनॉमिक एंड इजी टू ग्रिप किचन टूल्स which revolutionized the industry by prioritizing usability and inclusivity. This example illustrates how empathy can drive innovation by guiding designers and entrepreneurs to create solutions that are truly meaningful and impactful for the people they serve. Let's move forward to the third principle. Creative confidence by Tom and David Kelly is often related to the notion of reframing problem to spark innovations. और जहाँ हम reframing problems की बात करते हैं तो the story of Airbnb illustrates the power of experimentation, doesn't it? Right, absolutely. चेस्की एंड गिबा ने जब पहली बार Airbnb के बारे में सोचा था तो वो भी इनके लिए भी आसान नहीं था, but by continuously testing and refining their ideas, they were able to create a platform that revolutionized the hospitality industry. The fourth and the very important principle of innovation is collaboration. The book highlights how multidisciplinary teams working together can generate breakthrough ideas and solutions, and the example of Apple iPod design team perfectly showcases that. Definitely. iPod जैसे रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट को डेवलप करने में बहुत सारे डिजाइनर्स, इंजीनियर्स, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स एंड मार्केटर्स ने कोलैबोरेट किया था. Their combined expertise resulted in a sleek design, intuitive user interface, and effective marketing strategy. Fundamentally changing the way people listen to music by bringing together diverse perspectives and expertise, the team was able to create an iconic product that changed the game. और ये जो गेम चेंजिंग होती है वो हर बिजनेस के लिए बहुत ज़रूरी होती है. And finally, embracing ambiguity. Ambiguity का हिंदी में मीनिंग होता है अस्पष्टता.
And ambiguity involves being comfortable with uncertainty and the unknown. उदाहरण के लिए टोयोटा को ही लीजिए. जब टोयोटा प्राइस हाइब्रिड कार डेवलप कर रहा था तब उन्होंने नहीं पता था कि मार्केट डिमांड क्या होगी, टेक्नोलॉजी चैलेंजेस क्या होंगी, मार्केटिंग स्ट्रेटजीज क्या होंगी. टोयोटा committed to hybrid technology, eventually launching the Prius as the world's first mass-produced hybrid car. Absolutely. This example illustrates how embracing ambiguity can lead to innovative solutions and transformative outcomes. So there you have it, folks. Creative confidence is not just a book; it's a roadmap for unlocking your creative potential and driving innovation. Riya, let's sum up what we have learned from creative confidence, and I think ये summary बहुत लोगों के लिए बहुत important होगी. बिल्कुल, sure Varun. It's about believing in your creative ability, understanding others' perspective through empathy, and redefining ideas through collaboration and iteration. Very true. And let's not forget about embracing ambiguity. Sometimes the best ideas come from exploring the unknown. आपको जाना पड़ेगा unknown की तरफ. Definitely, and it's all about self-awareness, seeking out opportunities, and surrounding yourself with supportive people, while committing to continuous learning and growth. कहते हैं ना, संगत भी बहुत कुछ दे के जाती है. Exactly, बिल्कुल आपने bang on बात की है. By following these principles, we can unlock our creative potential and make meaningful contributions in both our personal and professional lives. Exactly, you are in a good company. Absolutely, it's been a journey of discovering. Now it's time to embrace it fully. Definitely. We highly recommend giving it a read, and we hope you found our insights very helpful. And don't forget to like, share and subscribe for more book reviews and discussion. Thanks for watching. And let's see you in the next video.